Am I audible? Yeah, it should stop. It should be working by now. Um, let's go here. Let's check. Like this. Close. Nice. यहाँ पे आ गए और यहाँ पे चलते हैं। आज पाइथन हम कर रहे हैं पाइथन जिसकी है सॉकेट प्रोग्रामिंग गाइड। तो स्टार्ट करते हैं। Socket programming is essential for network communications, enabling data exchange across different devices. In Python, socket allow for IPC over networks। तो सीधा उस पे जाते हैं। ओवरव्यू देख लेते हैं। जिसका है सॉकेट बाइंड लिस्टिंग एक्सेप्ट कनेक्ट connect X, send, receive, and close. TCP sockets, you are going to create socket object using socket.socket, specifying the socket type as socket.sockstream। sockstream एक TCP sockstream TCP का हमारा वो फ्लो है। TCP का डायग्राम, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। TCP हमारा रिलायबल है और 3 वे हैंडशेक करता है तो हमारा कोई पैकेट ड्रॉप नहीं होता। अनलाइक यूडीपी जहाँ पे हमारा पैकेट ड्रॉप हो सकते हैं। तो ये मेनली दिखा रखा है हमारा। पहले सॉकेट हम डिफाइन करेंगे, फिर उसको बाइंड कर देंगे उस आईपी पर, फिर लिसन करेंगे। फिर हमारा क्लाइंट जो है यहाँ पे सॉकेट डिफाइन होगा, ये यहाँ पे कनेक्ट करेगा और ये यहाँ पे एक्सेप्ट करेगा। फिर यहाँ पे सेंड करेगा और यहाँ पे रिसीव करेगा। फिर ये यहाँ पे सेंड करेगा, ये रिसीव करेगा और एक क्लोज को आप यहाँ पे सेंड करेगा क्लोजिंग मैसेज और ये यहाँ पे रिसीव करके यहाँ पे क्लोज कर देगा। Python left hand column represents the server, on the right hand side the client. Starting the top left hand column, note that the API call that server makes to set up a listening socket. Socket, bind, listen, accept. A listening socket does just what its name suggests. It's listen for connection from clients. When client connect, the server calls dot accept to accept or complete the connection. The client call dot connect to establish a connection to the server and initiate the three-way handshake. The handshake step is important because it ensures the। तो ये हमारा TCP 3-वे हैंडशेक के बारे में बता रहे हैं, जो कि हमारा पहले वहां पे हैंडशेक होता है, उसके बाद हमारा कनेक्शन स्टेब्लिश होता है जिससे हमारा कोई पैकेट लॉस नहीं होता। यहाँ पे हमारा एक बेसिक सर्वर है। यहाँ पे हमने सबसे पहले सॉकेट इंपोर्ट करा, होस्ट और पोर्ट डिफाइन कर दी और फिर यहाँ पे हमने सॉकेट डॉट सॉकेट पर यहाँ पे TCP IPv4 के लिए AF INET यूज करा है और यहाँ पे TCP यूज करा है। ये तो आर्ग्यूमेंट हमारे यूज हो रहे हैं आईपी और उसका प्रोटोकॉल एस एस। फिर हमने बाइंड करा है उसको हमारे इस पोस्ट और पोर्ट पर। फिर हम यहाँ से लिसन हमने स्टार्ट कर दिया। फिर कनेक्ट और एड्रेस हमने किया है एक्सेप्ट। विथ कनेक्शन प्रिंट एफ हमने कर दिया, कनेक्शन कनेक्टेड टू, फिर एड्रेस प्रिंट किया और यहाँ पे डेटा को हम कनेक्ट करने के बाद रिसीव कर रहे हैं जो कि 1024 बाइट है। अगर डेटा नहीं है तो ब्रेक करके। सो लेट्स देखते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है। सॉकेट डॉट सॉकेट क्रिएट कर रहा है, राइट। सॉकेट डॉट सॉकेट क्रिएट कर रहा है ऑब्जेक्ट जो कि सपोर्ट कर रहा है कॉन्टेक्स्ट मैनेजर टाइप। सो हम यूज कर सकते हैं विथ स्टेटमेंट के साथ। सो कोई यहाँ पे नीड नहीं है कॉल करने की। एस डॉट क्लोज विथ सॉकेट डॉट सॉकेट, सॉकेट डॉट ए एस आई नेट एस एस पास। यहाँ पे हम डिफाइन कर रहे हैं 2 आर्ग्यूमेंट जो कि हमारा हो गया IPv4 एंड TCP प्रोटोकॉल। Argument pass socket are constants used to specify address family and socket type.afnet is the international internet address family for IPv4.sockstring is the type socket for TCP, the protocol that will be used to transport message in the network। TCP हमारा यूज हो रहा है
सो दोबारा देखते हैं यहाँ पे। हमारे यहाँ पे टीसीपी यूज हो रहा है, जो हमारा मेनली डेटा वगैरह ट्रांसफर करेगा। और हमारा आई एफ नेट जो है यहाँ पे ए एफ नेट, ये हमारा आईपी डिफाइन हो गई। द डॉट बाइंड मेथड इज यूज टू एसोसिएट दिस सॉकेट विद अ स्पेसिफिक नेटवर्क इंटरफेस एंड पोर्ट नंबर। तो हमारा एस डॉट बाइंड जो यूज हो रहा है एसोसिएट करने के लिए हो रहा है नेटवर्क को विद सर्टेन network interface. The value passed to dot bind depends on the address family of the socket. In this example, you are using socket.afnet IPv4. So it expects host and port. Host can be host name or empty string. If an address is used, host should be an IPv4 formatted address string. The IP address 127.0.0.1 is standard IPv4 address for the loopback. So only processes that host will be able to connect to the server. If you pass an empty string, the server will accept connections on all IPv4 interface. तो अगर हमने हमारा आईपी स्ट्रिंग एम्प्टी छोड़ दिया तो ये ऑल पे डिफाइन हो जाएगा, या फिर हम 0.0.0.0 कर सकते हैं। Port represent TCP. Port represent TCP port number to accept connections from clients. It should be an integer from 1 to 65535 as 0 is reserved. Some system may require super privilege if the port number is less than 1024. Here's a note on using hostname with bind. If you use hostname in bind host portion of IPv4 6 socket address, the program may show a non-domestic behavior as Python uses first address returned from the DNS resolution. The socket address will be resolved differently into an actual IPv6 v46 address depending on the result from DNS resolution and or host configuration for user numeric address in host portion. You'll learn more about this later using host names. For now, let's just understand that when using a host name, you could see different results depending on what's returned from the host name resolution process. These results could be anything. The first you run over your application, you might get address 10.123.4.23. The next time you get a different address. In this server example, .listen enables server to accept connection. It makes the server a listening socket. तो यहाँ पे listen कर रहा है और यहाँ पे ये accept कर रहा है हमारा। यहाँ पे एक बार देख लेते हैं, ये पूरा सेम कोड है, इसको रन करते हैं। The listen method has a backlog parameter. It specifies the number of unaccepted connections that the system will allow before refusing new connections. Starting in Python 3.5, it's optional. If not specified, a default backlog value is chosen. If your server receives a lot of connection requests simultaneously, increasing the backlog value may help by setting the maximum length of the queue tip for pending connections. The maximum value is system dependent. For example, on Linux C, the .accept method blocks execution and waits for an incoming connection. When a client connects, it returns a new socket object representing the connection and a tuple holding the address of the client. The tuple will contain host and port for an IPv4 connections or host port for flow info scope ID for IPv6. One thing that's important to understand is that you will have a new socket object from .accept. This is important because it's the socket that you will
used to communicate with the client. It's distinct from listening socket that server is using to accept new connection. After dot accept provides the client socket object on an infinite while loop is used to loop over blocking calls to dot receive reads whatever data the client sends and echoes it back using dot send all. If dot receive receives returns an empty string that signals that the client closed the connection and the loopback is terminated. Echo client. Now it's time to look at the client source code. एक काम करते हैं इसको डिलीट कर देते हैं इसको रिनेम कर देते हैं एज सर्वर डॉट पाई और एक नई फाइल बना लेते हैं एज क्लाइंट डॉट पाई इसको क्लोज करते हैं एंड सबसे पहले मैं ऊपर चल रहा हूँ सर्वर का मैं दोबारा खुद से टाइप कर रहा हूँ एक काम करते हैं मैं सेकंड स्क्रीन अपनी शुरू कर देता हूँ सेकंड स्क्रीन मेरी शुरू होने देता हूँ मैं 2 मिनट में भी सेकंड स्क्रीन मेरी शुरू हो चुकी है इसको मैं इधर भेज देता हूँ मेरी रिकॉर्डिंग ठीक चल रही है नाइस इसको मैं यहाँ रख देता हूँ सर्वर में यहाँ रखता हूँ और यहाँ पर कंट्रोल ए से हटाकर इंपोर्ट सॉकेट देन होस्ट में डिक्लेयर कर रहा हूँ 127.27.4.1 ये आईपी एड्रेस सेम ही है एज 127.4.4 की जगह और पोर्ट में डिक्लेयर कर रहा हूँ 1234 इसको क्लोज करते हैं एंड विद सॉकेट डॉट सॉकेट एक क्रिएट करते हैं सॉकेट डॉट ए एफ inet and socket dot sock stream as s then s करेंगे हम bind host and port के साथ then s करेगा listen then nl ADR address connection address is equal to s dot accept with one हम प्रिंट करेंगे connected by while group data is equal to one dot सी जो कि होगा 1024 बाइट्स और अगर डेटा नहीं है तो हम कर देंगे ब्रेक
कौन डॉट से डॉट जो कि हमारा होगा डेटा। ओके, ये हो गया है। अब क्लाइंट देख लेते हैं हमारा। क्लाइंट हमारा हो जाएगा इनपुट सॉकेट। सबसे पहले होस्ट डिक्लेयर करेंगे इक्वल टू 127.4.1.2.1। हम पोर्ट डिक्लेयर कर देंगे एज इनपुट p4। फिर सॉकेट डॉट सॉकेट फाइल सॉकेट डॉट आई हैव at and socket dot for stream as s फिर s dot connect host and both s dot send all lead for bytes hello world then data हमारा हो जाएगा s dot recv recv 1.2.024 print f receive data r ये हमारा हो चुका है। इसको वापस ले आते हैं यहाँ पर और इसको धीरे धीरे हम देते हैं। फिलहाल इसको बड़ा करके ये कोड मैं लिख चुका हूँ जैसे मैंने लिखा। In comparison to the server, the client is pretty simple. It creates a socket object, uses dot connect to the server, and calls send to send its message. Lastly, it calls dot receive to read the server reply, then prints it, running the echo server, client and server. In this section, you will run the client and the server to see how they behave. Open terminal or command prompt. Navigate to the directory of your script. Ensure you have Python 3.6 or above. Python, your terminal will appear to hang as because server is blocked or suspended. On dot accept. It's waiting for a client connection now. Open another terminal window and run the client. ओके, रन करते हैं। सबसे पहले हमारा 1.0.0 कर लेते हैं तो रन कर देंगे। जीरो कर लेते हैं। इसको भी रन कर लेते हैं। ओके, दोनों साथ में रन नहीं हो पा रहे तो एक काम करो, इसको रन कर लो। An attempt to access its right forbidden by its access परमिशन एरर आ रहा है। ओके, तो एक काम करते हैं, CMD में चलते हैं या फिर एक काम करते हैं, यहाँ पे जाके यहाँ पे add folder to generic context, add folder to chat, open an integrated terminal, evident file explorer। अंदर चलते हैं यहाँ पे CMD control shift enter।
dir Python 3 server dot Python server dot py प्लस करते हैं cd Python client dot receive hello world connected by ये हमारे यहाँ पे आ गया receive hello world. Okay. In the output above, the server printed the error tuple returned from s.accept. यहाँ पे चलते हैं dot send on hello world. In the output above, the server printed the ADDR tuple returned from s.accept. This is the client's IP address and TCP port number. The TCP port number will most likely be a different when you run it into your machine. Viewing socket state. To see the current socket to current state or socket on your host, use netstat. It's available on default netstat. Either the specified port number is wrong or server isn't running, or maybe there is a firewall in the file that's blocking the connection. Communication breakdown. Now you take a closer look at how the client and server communicated with each other. Listening on. When using the loopback interface, data never leaves the host or touches the external network. In the diagram above, the loopback interface is contained inside the host. This represents the internal nature of the loopback interface and shows that the connection and data that transmits it are local to host. Application to use करिए loopback interface communicate करने के लिए other processes running जो run कर रहे हैं host पे security and for security or isolation from external network because it's internal and accessible only within the host. It's not exposed. You can see this in the action if you have an application server that uses its own private database. If not the database used by other servers, it's probably configured to listen on the connection of the loopback interface only. If this is the case, the other hosts on the network can't connect to it. When you use an IP address other than 127.0.1 or 1 in your network, it's probably bound to be as Ethernet interface that's connected to an external network. Be careful of it, it's nasty program will be short to return. Mostly before venturing out, don't check the local host. Handling multiple connections. The Echo server definitely has its limits. The biggest one is that it serves only one client and then exits. The Echo server has limitations too. The Echo client has limitations too. But there's an additional problem. When the client is using s.receive, it's possible that it will return only one byte. P.h from hello world. The process argument 1024. If use our maximum amount of data to be received at the once, it doesn't mean that the receive will return 1024 bytes. This send method also behaves this way. It returns the number of bytes sent, which may be less than any size of data passed in. You are responsible for checking this and calling dot send as many times as needed. Applications are responsible for checking that all data has been sent if only some of the data were transmitted. In the example above, you avoid you avoided having to do this by dot send by using send all.
Unlike send, this method continues to send byte data from bytes until either all data has been sent or an error occurs. None is returned on success. You have two problems at hand at this point. How do you handle multiple connections concurrently? You need to call dot send and dot receive until all data is sent or received. What can you do? There are many approaches to concurrency. Concurrency. A popular approach is to use asynchronous I/O. The trouble with concurrency is it's hard to get right. There are many subjects to consider and guard against. All it takes is one of these to manifest itself. Your application may suddenly fail in not so subtle ways. This isn't meant to scare you away from learning and using concurrency program. If your application needs to scale, it's necessary if you use more than one processor or one core. However, for this tutorial, use something that's even more traditional than threads and are easier to reason about. You are going to use grandiose system calls dot select. Dot select method allow you to check for I/O completions on more than one socket. So you can call dot select to see which of the dot .io is ready for reading or writing. But this is Python, so there's more. You're going to use selectors module in the standard library. So most efficient implementation is used regardless of operating system you happen to be running on. Still, by using dot select, you're not able to run concurrently. That said, depending on your workload, this approach may still be plenty fast. It depends on what your application needs to do when it services a request and the number of clients it needs to support. And Sync uses single-threaded cognitive multitasking and an event tool to manage tasks. With .select, you'll be writing your own version of an event loop. Multiple connection, client and servers. हमने यहाँ पे सिस्टम इंपोर्ट किया सॉकेट पहले से था हमने सिलेक्टर से इंपोर्ट किया और टाइप इंपोर्ट किया फिर हमने सेल इज इक्वल टू सिलेक्टर डॉट डिफॉल्ट सिलेक्टर कर दिया और यहाँ पे एल्स ऑफ पे हमने डिफाइन कर दिया एल्स ऑफ बाइंड कर दिया लिसन हम यहाँ पे लिसन कर रहे हैं और सेट फॉल्स the biggest difference between this server and echo server is to call lsoft dot set blocking false to configure the socket in non-blocking mode. Calls made to this socket will no longer block when it's used with cell.select. As you'll see below, you can wait for an event on one or more socket, then read and write data when it's ready. Cell.register registers the socket to monitor with cell.select for an event that you're interested in. For the listening socket, you read events, selectors.event read. Next is the event loop. Try white loop event timeout for 3
socket, then first, and then in types, then हमारा हो जाएगा in selectors dot default selector post हमारा हो जाएगा post and mode हमारा हो जाएगा this dot gb right? Okay dot socket dot effect init socket dot dot stream so dot line post and mode so dot listen in next listening on post and mode so dot then logging and calls and register and so selectors inventory and हमारा डेटा हो जाएगा none यहाँ पे देख लेते हैं क्या हो रहा है the dot select method allow you to check for IO completions on more than one socket ठीक है you can call dot select to see which socket have IO ready for reading and writing okay by using dot select you are not able to run concurrently that's it depending on your workload this event is fast as you use a single threaded but testing on event loop when you do it select you will be writing your own version of event loop with more siblings in the multiple thread even when you have concurrency you will have to use GIL global interpreted log with CPython and Py is effectively limits the amount of workload you can do in parallel ways. This is also dot select may be perfectly fine choice. Don't feel like you have to use asynchro threads or the latest listen to library. Typically in the network application, your application I was found anyway. It could be waiting for local network or endpoint on the other side of the network for discrediting and so forth. You're getting requests from class that initiate CPU bound work. Look at the concurrency feature. It will use a class window. This is the food of the biggest difference between this server and the Echo server is to call lock dot set blocking false to configure the socket in non-blocking mode. False led to this socket will no longer block. When it's used with cell dot selector, you will see below you can wait for event on one or more socket and then read and write data when it's ready. Cell dot register registers
Cell dot register the software monitored with cell dot collector. For the event that you're interested in for listening viewers, you want to read selectors dot event tree to store whatever arbitrary you like along with sockets. You will use data. It's return web dot select return. You will use data to keep track of what being sent and received on the socket. Try, why try? ये मेरे को चाहिए कि मैं अगर एक अपना सर्वर डेवलप कर रहा हूँ डॉट नेट टर्मिनल बंद करते हैं क्लोज करते हैं ऑल सेव क्लिक है टू सेव कंट्रोल ए एंड डिलीट यहाँ पे मेरे को चाहिए कि मान लो जैसे मैं अपना यहाँ पे सर्वर है कि जैसे मेरा पाइथन सर्वर है इधर ठीक है ये मान लो मेरा सर्वर है यहाँ पे जैसे मैं इसको सी टू सर्वर मान लेता हूँ और यहाँ पे एक लाइन क्रिएट की है जैसे लाइन 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 के लिए कुछ भी ले लेते हैं जैसे मैं इसको क्लाइंट के लेता हूँ जैसे अपना क्लाइंट हो गया ये सर्वर हो गया और क्लाइंट हो गया तो मेरी नीड क्या है मेरी नीड है कि ये मेरा सी टू रहे ठीक है ये सी टू मेरा खाते रहे जैसे मैंने इसमें मान लो अगर एक ऐप मेरा डाल रखा है तो ये यहाँ पे जाके इस पे रिपोर्ट करे मतलब इससे कनेक्ट कर दे यहाँ पे इसका मान लो मेरा एक ऐप चल रहा है तो ये मैं वो मान लो ये उठाऊं ये मान लो मेरा ऐप है इसके बैकग्राउंड में ठीक है ये मान लो इसके बैकग्राउंड में चल रहा है ठीक है ये जो बैकग्राउंड वाला ऐप है इसको भी देखो ये बैकग्राउंड वाला इस पे कनेक्ट करना चाहिए और मेरा जो मेन ऐप है वो इस पे चलना चाहिए ठीक है हो गया फिर इसको इस पे अपना कमांड भेजिए इसको इंटरप्रेट करना है इस पे एग्जीक्यूट करना है क्लाइंट पे एंड उसका रिजल्ट इसको दोबारा भेज देना है मेरे इस पे अगेन दोबारा फिर मैं चाहता हूँ ये दोबारा अपना इस पे भेजिए एंड ये दोबारा अपना बस इस पे भेज देना ये चाहता हूँ कोई ये कैसे होगा इसके लिए एक तो हमारा होगा नहीं एक यहाँ पे भी होगा यहाँ पे भी होगा यहाँ पे भी होगा ना तो बेसिकली हमारे सर्वर पे होना चाहिए एक तो नोट पैड ले देंगे नोट पैड पहला तो should be table is connected clients ठीक है सेकंड पे क्या करना चाहिए इसको should be table is send and receive commands ठीक है थर्ड होना चाहिए should be able to send and
receive the receive response using enough resources. अभी के लिए मेरी ये तीन है, ठीक है। ये तीन ये मेरा इस सर्वर क्या कर पा रहा है। कैंसिल। अगर मैं ढापे जाऊँ, मैं चैट जीपीटी पे क्यों शो which I find this I made it to be to able to सॉकेट अपना नेटवर्किंग के लिए हो गया। ये कोड नेटवर्किंग करेगा, है ना। हैंडल करेगा क्लाइंट कनेक्शंस और रिसीव करेगा अपना डेटा। ये सिलेक्ट करेगा मल्टीपल क्लाइंट simultaneously without threads. Therefore, use and uses threading option to prefer three client threads instead of select list multiplexing. So it will manage command and response workflow between server and clients. Struct JSON for tagging and packing data in constant formats. Or connected client in list and disk. And list and diff. Send receive commands. Send and receive commands and responses. Non-blocking communication using almost conscious of this. How to send commands to a server in Python software. Command dot input converts string into bytes, which necessary for sending over a socket. Okay, it's to like 40 trillion. और ये करके ये हो गया ls-l send all, जिसमें हम कमांड कर रहे हैं इनपुट UTF-8 से। ये क्यों कर रहे हैं ताकि ये स्ट्रिंग कमांड को कन्वर्ट करे बाइट में, जो कि नेसेसरी है सेंडिंग सॉकेट। सेंड ऑल से सारा सेंड ऑल होगा। send receive a response. The server send the output, we need response. Client.software.receive.input UTF-8 server side. From the server in the client. Socket file. Python socket server. We will see Python socket server as socket server. Right? We use import socket module that's created from the task to establish connection between server and client. We can obtain host address by using socket.get hostname function. It is recommended user port address above. Node left and request for standard internet protocol.
सर्वर प्रोग्राम। सबसे पहले हमने होस्ट नेम लिया, पोर्ट डिक्लेयर करी, सर्वर सॉकेट, सॉकेट और सॉकेट, look closely the bind function takes couple as argument. Server socket dot bind host and port. Configure how many clients can listen simultaneously. Socket dot listen. Connection and address is equal to socket dot accept. Printf connection from plus string address. While true data is equal to connect dot receive dot decode. If not data, break from connected user. Data is equal to input. And client हमने किया hosted port socket connection message with message or lower by message or port. It's taking it as text row and wanting to execute as a fucking command. Server side sending commands import socket is import socket is for anomaly. Socket server socket we want to socket dot socket socket dot the inet and socket dot dot string where host host input available host is equal to let's say host equal to host in address is equal to socket dot find host and port. But here for the has we find out the host and port where server listen. Let's see take print कर देते हैं हम waiting for connection line socket is equal to socket dot excel print excel connection
uh, I guess then the mind like yeah, okay, not okay, no, no, cannot, cannot, then command dot which is usually in eight here, which is usually of eight. ओके हमारा हो चुका है फ्लाइट साइड में देखने को मिला रॉकेट सी एन फ्लाइट रॉकेट is equal to chocolate dot rocket chocolate dot dn direct rocket dot stop stream server address equal to dot flow equal to brackets to have very much like 1 2 3 4 then finally connected to the server. Then हमारा डेटा एक पॉइंट हो जाएगा now we have so what receive you have a zero control on my data dot report df 8 training table leave execute the command. You can use modules like subprocess to execute received command on the client. You subprocess right out is equal to subprocess dot get output command shell is equal to text text is equal to also true frame command also is f
output, dialog, and right socket, dot send all, output dot input, which is UTF 8, except sub process dot for equals SR and E, and execute the command E lion E and so dot send all str E dot info UTF 8 dot close, यहाँ से this हो गया close, सेव। अब यहाँ पे चेक करते हैं कि हमारे चलेगा या नहीं। यहाँ पे चलते हैं उसको सी एंड डी, इसको करते हैं कॉपी, ये करते हैं सी डी, क्लियर, दिया है आर, यहाँ पे दिया आर पे चल रहा है पाइथन सर्वर डॉट पाइथन. So if it dot bind takes exactly one argument to one given. Then यहाँ पे लगे सर्वर एड्रेस इक्वल टू तो यहाँ पे कर दो हमारा पोस्ट हटाकर यहाँ पे डाल दो सर्वर एड्रेस, it should run now, waiting for a correction. Python dot a request send or receive dot is not because socket is not connected, and then sending supply. Server address is equal to connect. Return is the connection one. Okay, सर्वर एड्रेस के नीचे कनेक्ट कर देंगे CLS CLSC dot connect, जो भी हमारा होगा
सर्वर ऑन हो जाएगा हमारा। 1 2 3 4 1 1 2 एंड देखते हैं। Takes exactly one argument, zero given of the zero given है। Server address order not valid in context। तो एक काम करो, इसको बंद कर दो। CD दोबारा यहाँ पे चलते हैं, एंटर करते हैं और यहाँ पे एक काम करो, 120 जमा कर दो। 127 1 इसको कॉपी करते हैं, सेव। पावर पावर सेव फाइव। ओके, यहाँ पे एरर आ गया अपने को। टारगेट मशीन एक्टिवली रिक्वेस्टेड पाइथन क्लाइंट डॉक्यूमेंट CNS पाइथन भी सर्वर डॉट पाइथन पाइथन सर्वर डॉट पाइथन वेटिंग फॉर अ कनेक्शन। तो इतना यहाँ पे हो गया रन। इसको मैं दोबारा यहाँ पे रख करूँ, वहाँ पे करूँ तो हमारा DRR चल गया। नाइस, DRR नॉट चल रहा है। और मैं चाहता हूँ ये जब मैं DRR चला है ये इस पे सेंड हो जाए। ट्राई आउटपुट। हमने यहाँ पे कनेक्शन बनाया ना, मैं चाहता हूँ कि हमारे ये जो व्यक्ति को कनेक्ट करे उसने। इसको बंद करते हैं और इधर चलते हैं। एक काम करते हैं, how to get host name of host name PC name PC hardware details in fact using that। तो मेरा बेसिकली आइडिया है, डायग्राम पे मैं दिखा देता हूँ। डायग्राम डॉट गेट सेव डिलीट करते हैं और थोड़ा बैक सुनते हैं। यहाँ पे तो मेरा आइडिया बेसिकली है कि यहाँ पे अपना प्रोग्राम हो गया, ये अपना प्रोग्राम हो गया। इसके अंदर हमारा क्या है, मैं बेसिकली एक फंक्शन क्रिएट करूंगा जो कि हमारे पीसी से सारी डिटेल फेच करेगा। उसने सारी डिटेल मान ली, ये डिटेल ले ली, बीच में क्लाउड फॉर कनेक्शन, और यहाँ पे मेरा मेन दूसरा अपना सर्वर चल रहा है वो हो गया। ठीक है,
ये अपना उस जैसे ही हमारा सर्वर क्लाइंट पे रन हुआ, मैं एक यहाँ पे एक और क्रिएट करूंगा अपनी फाइल जो कि स्पेसिफिकली अपना हार्डवेयर का डिटेल लेगी। अब क्या होगा कि जैसे ही अपना सर्वर कनेक्ट होगा, वो इसको रन कर देगा। ये अपना कनेक्शन लेगी, अपना डेटा लेकर इस पे भेजेगी, और मैं इससे लेके अपने सर्वर पे भेज दूंगा और सर्वर पे रिस्पॉन्स आ जाएगा इस वेरिएबल में स्टोर करके। तो बेसिकली आइडिया मेरा वो है, सिंगल स्क्रिप्ट get GPU, get this, just tell me how to get detail, CPU detail, and also that's ये हो गया। अब यहाँ पे एक और फाइल बना लेते हैं अपन, हार्डवेयर डॉट फाइल के नाम से, जिसमें हम करेंगे इंपोर्ट सॉकेट का, फिर इंपोर्ट कर देंगे यूटीआई का एंड सीपीयू इन्फो का, सीपीयू इन्फो का जो कि मैं डाउनलोड कर लूंगा। फिर हम होस्ट नेम करेंगे हमारा सॉकेट डॉट गेट होस्ट नेम, सीपीयू इज इक्वल टू सीपीयू इन्फो डॉट गेट, ओके सीपीयू इन्फो डाउनलोड कर लेते हैं। सीपीयू इन्फो का ऊपर होगा सीएमडी में ऑलरेडी ऑप्शन होना चाहिए पे, कंट्रोल न्यू करके एंटर करो। डाउनलोडिंग हो रहा है, इसको डाउनलोड से रन, ये हमारा डाउनलोड हो गया है। एंड यहाँ पे चलते हैं सीक्रेट आ गया, चाहिए आ गया सीपीयू इन्फो डॉट गेट सीपीयू इन्फो। नीचे होगा गेट सीपीयू इन्फो आ गया अपना यहाँ पर, इसको यहाँ पे रख लेते हैं और यहाँ पे आ गया गेट सीपीयू इन्फो, सीपीयू नेम इज इक्वल टू सीपीयू डॉट गेट जो सीपीयू is equal to util dot cpu down
Logical is equal to false. CPU writes is equal to s dot CPU count. Logical is equal to true. Then is equal to dot virtual memory. Total then GD is equal to ground. Then your total divided by 1024 8 comma 2 and 1 is equal to CPU, CPU name, CPU heads, CPU force, then total and GD, print, all in one. ओके सारी डिटेल आ चुकी है हमारे पास लेट्स सी देखते हैं गेट हार्डवेयर हार्डवेयर इंपोर्ट गेट हार्डवेयर एक काम करते हैं यहाँ पे फंक्शन बनाते हैं डेफ का ये हार्डवेयर से in यहाँ पे कॉलेज वाले पे काम करते हैं फिलहाल कॉलेज वाले कुछ भी नहीं है एक काम करो इसको हटाई दो और नीचे चलते हैं इसको बता देते हैं किधर आ रहा था एरर किधर है एरर क्यों नहीं दिखा मेरे को इसको रन बिंदु क्या है हमारे अच्छा
प्रिंट कर दो और इन्वाइट एंड यहाँ पे गेट हार्डवेयर कॉल कर देते हैं एंड अब रन करेंगे इसको तो हार्डवेयर प्रिंट होना चाहिए वेंडर मॉनिटर ओके सब प्रिंट हो रहा है अपना और यहाँ पे एक लाइन डॉट फाइल करते हैं फ्रॉम हार्डवेयर इनपुट गेट हार्डवेयर यहाँ पे हमारी इंफॉर्मेशन आ गई कमांड सेंड करने के लिए हमें करना है भाई हो चुका है मिशन हो चुका है सॉक डॉट सेंड मतलब कमांड देनी है हमें कमांड इज इक्वल टू अब यहाँ पे हम करेंगे कमांड इज इक्वल टू जो कि है हमारा गेट हार्डवेयर एंड देन हम करेंगे सॉक हमने यहाँ पे सॉक किस नाम से बनाया था इस नाम से हम यहाँ पे करेंगे डॉट सेंड ऑल जो कि हमारा आर्ग्यूमेंट होगा कमांड का यहाँ पे इसको प्लस करते हैं और देखते हैं क्या आउटपुट आएगा इसको रन करते हैं सर्वर यहाँ पे करते हैं ओके कमांड और बाइट टाइप ऑब्जेक्ट ओके बाइट टाइप चाहिए हमें इसको बाइट बनाना पड़ेगा और डू आई कन्वर्ट इट टू बाइट ओके कमांड डॉट इनपुट करना पड़ेगा UTF-8 में सेंड ऑल में कमांड डॉट इनपुट into UTF-8 no connection would be made okay see helpless करते हैं इसको और यहाँ पे इसको रन करते हैं सॉकेट okay how do I now get into a text replacing मैं करना पड़ेगा तो उसने क्वांटिटी के उसकी सीपीयू अब मैं थोड़ी देर में लाइव स्ट्रीम करूंगा अभी लाइव स्ट्रीम बंद करते हैं